a cognitive skill only. Jadio tamar, yeah. Although it is being included in your part of cognitive psychology, problem solving is a large skill, is a very, very important human skill. And all of you know, the life has problems all around you. Every time you are in pool of problems, and you try to solve your problems, and that is a basic skill. And your cognitive abilities play an important part in the solution of your problem, life problems. And we have to know what is a problem, how different kinds of problems are there, how we solve those problems, what are different techniques of solving problem, all different kinds of things about problem solving and decision making. When we think of problem solving, it is also being referred to as solving the problem and undertaking a decision making process. Now, solving a problem means finding a way out of a difficulty, around an obstacle, attaining an aim that was not immediately attainable, understandable. Means when you are supposed to solve a problem, there is some hindrance, there is some difficulty, there is some blockage, something difficult is there for you, which you don't find an immediate solution about. And that is your problem solving. And as I already told you, that life has different problems at different times of life. There are some common types of life. There are also difficult problems of life. And how we address those problems, how as human beings we solve those problems. Those are the kinds of things that we have to discuss today. Now about, first of all, there is some reference about types of problems. Types of problems, when you think of, there can be many different types of problems which can be explained in many different angles or many different ways. But here in your syllabus it is written one as ill-defined problem and well-defined problem. Theta type kuhauchi. Gote kuhauchi ill-defined problem, gote kuhauchi well-defined problem. What is the difference between ill-defined? It's a continuum. It's not that a problem is totally ill-defined and another problem is totally well-defined. But it's a continuum. Continuum means there are some problems which are largely ill-defined. There are some problems which are moderately ill-defined, like that. Now, what is an ill-defined problem? Ill-defined problems are those categories of problems which you face as a problem, but you are not able to conceptualize, understand, and find out some kind of meaning about that problem, some kind of referent about those problems. Means whenever you have a problem, and you don't understand it, the nature, the characteristics of the problem, exactly what it is, but a problem, then it's a ill-defined problem for you. Well-defined problem means there is a problem, you understood the problem, you have your kinds of approach, solutions for the problem, you go for solving the problem, like that. Then from ill-defined to well-defined problem means it is also referential. Referential means a problem may be ill-defined for you, but it is well-defined for another person. Supposing a higher mathematics, if you give to it a school student, it is an ill-defined problem for him. But for a college student, for a BSc student, it is a well-defined problem. Then we can classify our problems into two categories, ill-defined and well-defined. Although it is a continuous system, some problems, when we say that a problem is ill-defined, thereby we mean that the person who is facing the problem is not able to comprehend the nature of the problem. Problem ta kon se bisare se thik jani paruni bujhi paruni sampurna bujhi paruni sathik jani paruni tale se problem ta ta pai gote ill defined problem semti well defined jete gote problem ta kon jane loko completely aware hi paruchi bujhi paruchi jani paruchi, yes, this is the problem, then this is an well defined problem. And now coming to characteristics of those problems, ame jetebale problem face karuchu, different kinds of problems, as I have already told you, we are facing kinds of problems in life. And all those problems are not same.
But all problems have certain characteristics of the following. A following kichi characteristics ta bhitere rahibo sabu problem. And what are the basic fundamental characteristics of those problems? First, intransparency, jota mu कहली ill defined. Intransparency. The problem is there, but you are not able to appreciate, understand, feel about that problem. The problem is not transparent. ଯାହାର problem ସେ ଜାଣି ପାରୁନି କ'ଣ ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟୁଛି କ'ଣ ହବ all those things he is not able to understand. That means the problem is a kind of it is having the characteristics of intransparency, lack of clarity of the situation. जो problem होची se problem is not being properly known. Then commencement opacity. Now commencement opacity means ତମକୁ ଯଦି ଜଣେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ତମର, what is your problem, not able to define, you will not able to say, means you are in commencement of opacity of that problem. You are not able to exactly pinpoint, exactly define, exactly say what is your problem, why are you behaving like this, why are you getting angry, you cannot explain it. Then it is a commencement opacity of the problem. Continuation opacity. Continuation opacity means as you proceed through, as you go through, the more you get into the problem, the more it becomes difficult to understand. एभलिया गोटे प्रॉब्लम तमे जेते ताको समाधान करिया पे चेष्टा करूचो, ग्रेजुअली से अधिका अधिका कष्ट सिना होची, अधिका अधिका डिफिकल्ट सिना होची, तार समाधान बाहरुनी. That is continuation opacity. Getting more and more complex, getting more and more confused rather. As you go on, जिते आगु जीवो सेते तुमको माने ये भितरे पसला भलिया लागिबो, जाल भितरे पसला भलिया लागिबो. That is continuation opacity. Then polytely. Polytely is a kind of problem characteristics in which the problem has multiple goals, and so reaching and selecting a particular goal is difficult. Polytely means you have a problem, but the problem has several endings. तार गोटे किसी बाटो नहीं, तार पांचटा माने it's a kind of problem which invites 5 different kinds of issues for you. एटा कोले सेटा रे उडर पड़िबो, सेटा कोले एटा रे उडर पड़िबो. When you have such a kind of problem which has many phases, many kind of difficulties, many sources of difficulties, that is a kind of polytely problem. बुझियो छि ना नहीं polytely कोन गोटे problem तुमको लागुछि किंतु तार पांचटा रूट, पांचटा मुह, पांचटा बा माने तमे समाधान करिया चाहिले गोटे समाधान कर देला आउ गोटे तार माने पुनी ए पड़ियो. Those are the kinds of problems which you can call polytely problems. And now inexpressiveness. There are certain kinds of problems, particularly human beings face largely these kind of problems. जो कुआ जाए अजागा घा देखी हबनी कि देखे हबनी. You have a problem, you cannot share it with, you cannot tell it to somebody, you cannot have your own solution. That is a kind of problem. There are some kinds of problems which are like this, which you can call inexpressive problems. You are not able to show it, you are not able to express it, you are not able even to admit it. That is a kind of problem. Then transience problem. There are certain problems which are ever changing. The problem, the nature was something today, tomorrow it is a different issue. Day after tomorrow it is another kind of problem. That is changing nature of the problem. Problem does not stick to any kind of issue, but it changes its characteristics. That is a transient problem. Then complexity is another characteristic. Some problems are simple. There are ways to get out of them. You can find out some solutions for them. But there are some problems which are so complex that you don't find any easy way out for them. And remind, I am telling you the characteristics of problems. Then we will go for kinds of solutions available. Characteristics, complexity, enumerability. Enumerability means tomorrow se problem kono, you cannot just outline it. You cannot
count it. This is my problem. This is problem 1. This is problem 2. Means you have so many problems. You just do not help yourself to count them, to number them, to understand them. That is enumerability. या भितर किछि किछि ओवरलैपिंग अछि सबु कांसेप्ट जो कहूची गोटे कांसेप्ट ऊपर आ गोटे कांसेप्ट मध्ये ओवरलैपिंग अछि माने इन्यूमरेबिलिटी ओवरलैपिंग अछि कॉम्प्लेक्स हे गेले इन्यूमरेबल होबार संभावना बेसी बट देयर आर सर्टेन वेज टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम्स देन कनेक्टिविटी हायरार्की ऑफ प्रॉब्लम्स गोटे लोअर लेवल ले प्रॉब्लम ताकू समाधान कले ता ऊपर को आउरी गोटे प्रॉब्लम ताकू समाधान कले ता ऊपर को आउरी गोटे प्रॉब्लम when the structure of the problem is like that we can call it a hierarchy of problems. Now heterogeneity means the sources of problem are many. There is no mane the problem is of such nature and magnitude that you don't have any manakara paisa जनकर प्रॉब्लम दैट इज वन सोर्स पैसा नाही असुविधा होची पैसा रा प्रॉब्लम हेची पैसा समाधान जोगाड़ कर देले प्रॉब्लम समाधान हो जिवो बट हायरार्की प्रॉब्लम हला पैसा जोगाड़ कला परे मध्ये ताको आउ से पैसा जोगाड़ रो आउ गोटे प्रॉब्लम लीड करी ताको कले आउ गोटे प्रॉब्लम लीड करी ए जो सिचुएशन जो काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम दोज आर कॉल्ड हायरार्की सॉरी हेटेरोजेनिटीज एंड डायनामिक्स हला problems are sources kete source ru problems asu janakara problem family ru asila family sangare work place ru asila sepote mane financial condition ru asila sepote disease ru asila sabu misikri jodi gote janakara problems asila se depression ku palauchi then it is a dynamics of problem anybody want to ask एगुड़ा कहला प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स कहार विषय कौन किसी पचारिबार अछि मु नेक्स्ट इश्यू को पढाई तमरे बहिर मुही कहूची मु किछ अलगा कहूनी प्रॉब्लम कौन तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन इट इज ए ह्यूमन प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ टू सॉल्व देम दिस इज आवर गोल ऑफ स्टडी टुडे एनीबॉडी हु वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन हिमानी यस सर सर नो क्वेश्चन सर हमर ए वीडियो कोन अपलोड होची YouTube रे हां कोन हां हमर ए जो क्लास गुडा हां क्लास गुडा के YouTube रे रिकॉर्ड होची एवं परे तुमको सेगुडा को चाहिए तमे परबत समय सुनी पारी माने तमे सुनिया को मो ना लिखि चैनल ना नहीं YouTube रे मो ना लिखि कि इग्नू मार देले आज्ञा तमे सेगुडा सुनी पारी आगो ये गुडा भी सुनी पारी से तो परवर्ती कथा वर्तमान तमे आगो सुने YouTube जा सुनिला तले कैरेक्टरिस्टिक्स विषय हां कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम मु कहि देली अच्छा तापर नेक्स्ट आसला टाइप्स ऑफ थिंकिंग इन्वॉल्वड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग तमर जहा कोर्स अछि मु गुटिया आडू कोर्स अनुसार कवर करि करि जाउछी सब प्रॉब्लम्स कोन दी प्रकार इल डिफाइंड वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कथा कहली आउ ता संगे कहली जे एथिकी जे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम से कथा नहीं सिंपल प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर्मल प्रॉब्लम इनफॉर्मल प्रॉब्लम को तमे विभिन्न प्रकार ना सोशल प्रॉब्लम इमोशनल प्रॉब्लम विभिन्न प्रकार ना हम कहि परबो देयर आर मेनी वर्ड्स व्हिच कैन बी एसोसिएटेड विथ प्रॉब्लम एंड ईच ऑफ देम रेफर टू ए टाइप किंतु तमरो गोटे दिया है जी इल डिफाइंड वेल डिफाइंड स्ट्रक्चरल बेसिस जो प्रॉब्लम का तमे भल रकम बुझी परिबो जानि परिबो दैट इज ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम तमरो होउची किंतु प्रॉब्लम विषय तुमे जानि पारुनो कोन एटा काई के होउची कोन नाही दैट इज ए इल डिफाइंड देन टाइप्स ऑफ थिंकिंग नाउ you know that your problem solving is largely having its resource in your thinking तमे केमिति भाबुचो केमिति चिंता करूचो केमिति रीजन आउट करूचो all those thinking procedures and processes are useful for your solving the problem the person who is a better thinker the person who has better ability to think about issues and things he will be a better problem solver se better solve kare so cognitively saying thinking is a very significant source of solving your problem ebong
थिंकिंग रे को प्रकार रो थिंकिंग हमर प्रॉब्लम सॉल्विंग रे सहायता करे। अच्छा प्रथमे लिखुची प्रोडक्टिव थिंकिंग। प्रोडक्टिव थिंकिंग मीन्स when you are capable of guiding your thinking to some kind of product, some kind of a production। मोर एटा असुविधा अछि तमे जदि भाबिलो म एटा कले केमिति कले कोन कले आई विल हैव ए सॉल्यूशन means you are producing a solution to your problem। that process of thinking a person is engaged। मोर आगु को परीक्षा अछि मु केमिति प्लान कले दिन को केते घंटा पढिले दिन को कोन कले को समय रे पढिले को बही पढिले आई कैन हैव माय सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। means you are going through a thinking process which you can designate as a productive process। productive thinking means whenever your thinking is organized to help you to find a possible solution, reasonable solution। पांच प्रकार रो सॉल्यूशन तुमको देई परिबो तमर थिंकिंग जे एई बाटे गले एमिति हबो एटा कले एमिति हबो एटा कले एमिति हबो एई जो जिंस that kind of thinking is called productive thinking hela। and productive thinking means finding a solution, finding a product, helping yourself to get a product, and that is what is a very essential process of thinking। thinking रे productive thinking jara nathibo thiki tar problem solving skill kami jibo, that is there। then being sensitive and open to structural requirements। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ନାହିଁ। ଖାଲି ମୁଁ productive thinking ଅଛି ମୁଁ ଘରେ ବସିକରି ଚିନ୍ତା କଲେ ହବ ନାହିଁ। I will have to think of also the kind of things that is useful for me for my problem। मोर जदि परीक्षा प्रॉब्लम मोर जो इंस्ट्रूमेंट दरकार मोर बही दरकार मोर रिक्वायरमेंट्स जहा आई मस्ट बी सेंसिटिव। मु जदि कहबी नाही मु बही काई किनिबो मु बही के पैसा खर्च करछि मु पढि देबी means you are not supporting to your productive thinking। productive thinking रथला you must be sensitive to the structural requirements। सबु समस्या समाधान रो अनेक समय रे गोटे रिक्वायरमेंट थाए गोटे स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट थाए गोटे बेसिक रिक्वायरमेंट थाए। किछि समस्या समाधान पैसा दरकार तुम पाखे जदि पैसा नहीं तुम जदि यू आर नॉट सेंसिटिव टू मनी पैसा अच्छी माने अजथा खर्च कर दो बजे बही किणबनी means you are not sensitive to structural requirement। then that is also one has to be mentally sensitive जे नहीं this is what is there। and another important thinking process is going beyond the knowledge। thinking से thinking is important। मु जेतिकी जानिची मु जहा जानिची सेतिकी रे मोर समस्यार समाधान हो नाही हबो नाही। whatever I know whatever things I understand मु जेते भाबिले मध्ये जहा कले मध्ये मु जेतिकी जानिची तादेरे समस्यार समाधान हबार नाही हो नाही। then I must go beyond my present knowledge। मु आक्वायर कोडे मु पढिया को पडिबो मु देखिया को पडिबो मु पचरिया को पडिबो। if this is the thing I must share with others ये प्रॉब्लम रो मु कोन बाटो कि आ जने बाटो कहिलेनी। that is what is sharing going beyond your knowledge। काना प्रॉब्लम ता केतबेल हबो when actually your knowledge is not sufficient to solve your problem। तमे जदि उत्तर जानिछो समाधान जानिछो तमे तो कर दो प्रॉब्लम काहे के हला ना तमे तार समाधान you don't have adequate things for the solution। सेति पई you must have to go beyond your knowledge। सेति में तमे नॉलेज से विषय केमिति गैदर करिवो काहाको पचरिवो कोठी जानिवो केमिति करिवो that is also a part of your thinking process। of thinking involved in problem solving मु कहिदली तापरे आउ दीटा टाइप बेसिक टाइप ऑफ थिंकिंग जोटा अछि जोटा कि थिंकिंग रो लाइफ रे समस्त माने इंपोर्टेंट आमे थिंकिंग ता कैटेगराइज करछु एनालिटिकल थिंकिंग सिंथेटिक थिंकिंग। these are also roots of problem solving process। जदो एनालिटिकल और सिंथेटिक थिंकिंग रो दीटा इंपोर्टेंट डायमेंशन सब काम पे खाली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जे कथा से कथा नुए but they are also useful for your problem solving। what is analytical thinking?
Analytical thinking है to elaborate a small thing to make a mountain out of a molehill. छोटिया जिनस को बढ़ेबार कैपेसिटी तुमको मु कहबी जे तमे समुद्र विषय रे रचना लेख यू विल हैव टू बी माने रचना लेखला बेलू तमे जेतबे लेखुछ तमर जो एक्सप्रेशन बढ़ुची दैट इज दैट देयर यू आर यूजिंग योर एनालिटिकल थिंकिंग जेतबे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखिया तुमको दरकार पड़ुची क्वेश्चन ता एटिके क्वेश्चन ता विषय तमे 8 पेज 10 पेज लिखिया दरकार पड़ुची यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ योर एनालिटिकल थिंकिंग your analytical thinking helps you to grow beyond the given provision जेति कि तुमको दिया है कि ताकू नहीं करी तमे कितने अधिका प्रोड्यूस करि पारुचो दैट इज ए काइंड ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग मु पांचटा वर्ड कहला परे तमे ता भितर जदी 10टा सेंटेंस कर देलो दैट इज योर एनालिटिकल थिंकिंग that is an important thing and then Scientific thinking. खाली analytical thinking मध्य चलिबनी thinking you must have also मु 5 पेज रो लिखि करी देली तमर परीक्षा रे गोटिए नंबर 2 नंबर या क्वेश्चन रे पड़ला तादेर कोन लिखिबो जे तमे 2 नंबर क्वेश्चन पे 5 4 धाडी लिखि परिबो दैट इज योर सिंथेटिक थिंकिंग तमे जब प्रेसी लिखुछ बड़ पैसेज टे दिया आइची तब 20-30 शब्द भीतर लिखुछ you are using your synthetic thinking. Analytical thinking means growing up your given provisions. Synthetic thinking means minimizing, synthesizing your given provisions. बुझियला ना नहीं analytical and synthetic thinking. तब कोर्स रे जहा अच्छे पॉइंट उडा डिस्कस कर देउची न जानि पाले पर असुविधा पड़े. And then another important aspect of thinking, a problem solving is insight. Insight is a very great source of human problem solving. What is insight? A very common phenomenon. Insight means as a human being you are such a powerful creature, you are such a powerful system that sometimes when you are engrossed into a problem all of a sudden you find a solution. हठात तुमको गोटे बाट देखा जीवा अरे हे दिस इज लाइक दिस तमे बेले बेले एक्सपीरियंस करिथिबो परीक्षा रे मैथमेटिक्स कला बेले गोटे प्रॉब्लम पड़ीची तमे बहुत चेष्टा करूछ त करि पारुन हठात पर तुमको अरे दिस इज हाउ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्वड यूफोरिक जोटा कि हमर माने गोटे ऑल ऑन ए सडन ए सॉल्यूशन कम्स ऑल ऑन ए सडन and that is a categorical thinking of human being. That is a capacity of insightful thinking of human being. Insight, all on a sudden, insight means getting all on a sudden. Eureka experience science रे कहा जाए. Archimedes कर जो माने पानी रे बुड़ीला बेलू को हठात से जानी पारले जे केमिति ओजन हेई परिबो जिंसटा कोन हेई परिबो जे प्रिंसिपल आर्किमेडिस से जो फीलिंग ऑफ यूरेका दैट इज व्हाट इज ए काइंड ऑफ इनसाइट. तमे जे साइकोलॉजी रे पढिबो मध्य इनसाइटफुल लर्निंग केमिति माने कोहलर केमिति से माकड़ कदली टंगा है दीटा बाड़ी थुआ से दीटा बाड़ी लगे एटा को लगेला सेटा को लगेला डेला बहुत कथा कला किछ करि परलानी तापर हठात ताको इनसाइट आसला से दीटा का बाड़ी जॉइन करी रीच करिला दैट इज व्हाट इज इनसाइटफुल लर्निंग एंड इनसाइटफुल लर्निंग is also a great source cognitive source of human problems. बहुत पावरफुल सोर्स होते अनेक समय तमे भी रियलाइज करथिबो तम प्रॉब्लम तमे भाबुथिबो बहुत व्यस्त थिबो होनी कोन करबी हठात ऑल ऑन ए सडन यू फाइंड ए सॉल्यूशन अरे हे एटा दिस इज व्हाट इज राइट देन यू डू इट दैट इज इनसाइटफुल सॉल्यूशन एंड मेटाकॉग्निशन इज आल्सो खाली तुम कहिछि मेटाकॉग्निशन कोन तमरो जो ज्ञान से ज्ञान अरे गोटे परिवर्तित अवस्था पुणी अच्छी समय 1 2 3 4 5 या जानिछ किंतु 1 2 3 4 5 को लेकरी बियॉन्ड मच बियॉन्ड आउ गोटे जिंस करा जाई परिबो आउ गोटे किए क्रिएट कर दे परिबो जे ये संख्या गुडा कर या अछि दैट इज व्हाट इज मेटाकॉग्निशन कॉग्निशन ऑफ कॉग्निशन तम बुद्धि रो आउ गोटे स्तर हायर स्तर दैट इज आल्सो ए वेरी इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर थिंकिंग प्रोसेस दा अछि ये पार्ट ता सरीला देन लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट
अच्छा सेकंड पार्ट रे मेनली तमरो अछि दुटा जिंस गोटे हला स्ट्रेटजीज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग आमे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पाई ह्यूमन बीइंग हिसाब रे आमे जो स्ट्रेटजी नो कौन कौन स्ट्रेटजी अछि एवं को को स्ट्रेटजी रो अर्थ कौन गोटे स्ट्रेटजी कहा जाए एल्गोरिथम्स हला एल्गोरिथम्स गोटे प्रकार फॉर सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम it is a very systematic structured strategy कौन एल्गोरिथम गोटे भल रेसिपी केमती हम लिखाई एक रे या करिवो करे बसी तेल गरम करिवो दुई रे या स्टेप बाय स्टेप and as if you follow the rules one by one then you have your problem solved you get the recipe proper recipe मैथमेटिक्स पिलाटे करूची से जानी स्टेप 1 या तापर स्टेप 2 या फार्मूला या फाइनल सॉल्यूशन या तेणु when any problem has a well defined process of solution 1 2 माने तम लाइफ रो प्रॉब्लम रो अनेक प्रॉब्लम अछि जोटा के सीधा सड़क एल्गोरिथम रे मध्ये समाधान हबो तार एक रु 2 2 रु 3 3 रु 4 4 रु 5 इट इज a systematic approach to a problem solution तमे परीक्षा रे माने कर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम गुटे तुमको दिया हला तमे जानिछ प्रथमे कोन करियो पड़िबो तापर कोन एक रे कोन दुई रे कोन तीन रे कोन तमे जदि को स्टेप टा भूल कर देलो तमरो मार्क कटि जाउछ कान यू आर नॉट फॉलोइंग द एल्गोरिथम्स तो एल्गोरिथम इज ए प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली फॉलोइंग ए वेल डिफाइंड प्रोसीड्यूर सेटा जोठी अप्लाई हबो से प्रोसीड्यूर टा जो प्रोसेस रे अप्लाई हबो दैट यू आर यूजिंग एल्गोरिथम्स एवं एल्गोरिथम प्रोसेस रो सॉल्यूशन is definite algorithm ro samastadu important jinsala the final solution is definite you will definitely get a solution if you follow the algorithms properly because it is a defined and systematic procedure already well established sei batare gole recipe ta पढ़ी करी एक पर दुई दुई पर तीन तीन पर तीन चार करी करी फाइनली ठीक बाटरे जाई करी फाइनल रेसिपी ता कले जोटा जति की मिनिट कहिछि सेति करी करी गले द फाइनली यू विल रीच द बेस्ट रेसिपी डिस्क्राइब प्रॉब्लम दे करूछ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 ठीक बाटरे गले you will get the best describe this is what is algorithm अच्छा मु तुमको मन कर एल्गोरिथम रो गोटे प्रॉब्लम आ गोटे तापर आसला ह्यूरिस्टिक्स हला जिते बेले आमे शॉर्टकट देखोज ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल इट इज नॉट एडवाइजेबल इट इज नॉट यूजफुल टू गो बाय एल्गोरिथम्स एल्गोरिथम पाई बेले बेले समय सापेक्ष बेले बेले हमको एल्गोरिथम बाटरे जिबारे हमको समय सापेक्ष बोरिंग एवं समय क्रमे आमे चाहू केमिति आमे अलगा बाटटे बाहर करू and that is called heuristics is a shortcut method for your problems बुझी होचे ना नहीं difference between algorithm and heuristic any question up to now it is important distinction algorithm and heuristics algorithm हला पूरा जणा बाट एई बाटरे गले से लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबो ह्यूरिस्टिक हला तमे जाउचो गोटे जगह को जिबार अछि तो ए बाटे गले बुलिए को पडुची मु एपट जाई करी देखि से बाटरे गले होय तो तमे ठीक जगह रे पहुंची पारो आवश्यक पड़िले से जगह रे मध्ये पहुंची न पारो भूल बाटरे एपट सेपट हेइ दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड ह्यूरिस्टिक्स डेफिनाइट मेथड एटा गोटे माने कोन शॉर्टकट approach आमे अनेक समय वी आर सपोज टू टेक शॉर्टकट थिंग्स नले माने खाली जदी एल्गोरिथम देकरी हमर लाइफ रो समस्या समाधान हबो ताले इट इज नॉट ऑलवेज आल्सो एडवाइज तेन ह्यूरिस्टिक मध्ये हमको अप्लाई करियो पड़े फॉर शॉर्ट किंतु ह्यूरिस्टिक रे गारंटी नाही एल्गोरिथम रे गारंटी अछि सॉल्यूशन विल बी रीच्ड समय लागिबो जहा भी हो अन्य जहा असुविधा हो एल्गोरिथम बिकॉज़ इट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इट guarantees
heuristic रे guarantee नहीं. heuristic रे तुमको नुआ बाटर जाइकरी शॉर्टकट बाटर जाइकरी देखिए पड़ो if it is happening. जदि घटिला it is good for you. जदि न घटिला it is not good for you. मन करो तमे मल्टीपल चॉइस परीक्षा देउछ चारिटा अल्टरनेटिव अछि आंसर जानि न सिटी जाव एल्गोरिथम अप्लाई करिवार सम नै सिटी ह्यूरिस्टिक अप्लाई करियो कोन ए ऑप्शन ए टा मते लागुनी एटा एमिति हितांता तमे सिटी लॉजिक अप्लाई करिकरी फाइनली ऑप्शन सी टा को आंसर बिली कहि देबो से जो मेथड अडॉप्ट कलो फाइनली ऑप्शन सी तुमको ठीक हे जाई पारे ऑप्शन सी मध्ये भूल हे जाई पारे किंतु तमे जो प्रोसेस अप्लाई कलो तमरा प्रॉब्लम सॉल्यूशन पाई तमे तो जानि थिले अलवा कथा दैट इज ह्यूरिस्टिक जदि न जानिछो that is your algorithm sorry this is heuristic gala तापरे आसला algorithm heuristics कहि साला परे नेक्स्ट हला ना कोन कहया पे चाहू important issues गुडा को खाली कहि जिबी now तमरो algorithm heuristics मु कहली सेटा हला two different fundamental brain work activity in approaching a problem in solving a problem आउ किसी problem solution अच्छी general strategies of problem solution जोटा को तमे कहि पारो means and analysis backward search planning strategy thinking aloud एगुडा का मध्य गोटे गोटे टाइप रो problem solving strategy means and analysis kind of problem solving hela you have a problem and you try to kono माने problem रो जो सब problems ताको आइडेंटिफाई सब problem रो सब problems अछि गोटे ये problem may be sometimes a unity of thing जहां भितरे different issues अछि तमरो गोटे प्रॉब्लम अछि दुटा करे पांचटा इश्यू कंबाइन तमरो प्रॉब्लम अछि दुटर के पैसा दरकार तमरो प्रॉब्लम अछि जार समाधान पे समय दरकार जार प्रॉब्लम अछि जार समाधान पे पांच जण लोक दरकार जार एमिति गोटे प्रॉब्लम दुटा के डिफरेंट थिंग्स आर नीडेड एवं व्हेन यू आर अप्रोचिंग द प्रॉब्लम तमरो मीन्स एंड एनालिसिस का पाजो प्रॉब्लम तमरो माने तमे देखिलो जे तमरो ये प्रॉब्लम रो समाधान पे माने करो हाउस बिल्डिंग तमे घर तयारी करूछो तमरो एटा गोटे दैट इज एन इश्यू दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर यू से जगह रे तमरो पैसा दरकार तमरो घर तयारी करिया पे समय दवा दरकार तमरो घर तयारी करिया पे मटेरियल दरकार तमरो घर तयारी करिया पे पांचटा लोक दरकार दीज आर ऑल डिफरेंट मीन्स टू द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम तेणु तुम कौन कर मीन्स एंड एनालिसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग रे कौन कर ना आको यू हैव टू डिसाइड व्हिच वन इज मोर इंपोर्टेंट इज मनी तेणु व्हाट यू डू यू फर्स्ट गो टू द बैंक एंड ट्राई टू गेट ए लोन हाउस बिल्डिंग लोन एंड इफ दैट इज सॉल्व्ड देन वन मीन्स इज सॉल्व्ड वन यू रीच्ड वन एंड देन सेकंड आई नीड कौन मन कर 5 people masons ये से let me contact people who will help me से माने मिली गले तापर थर्ड तापर फोर्थ as you proceed in this way this is your means and method of going to a problem and this is a kind of problem solution and जते बेले तमे एई भलिया प्रॉब्लम को एड्रेस करूछो एई टेक्निक रे वन बाय वन तार सब यूनिट्स को एड्रेस करूछो you are going through a means and analysis. Another problem solving strategy is a backward search. What is a backward search? मोर घर दरकार why should I go to the bank and arrange money? Why should I go and call people? Why should I go and purchase the materials? I can do one thing. I can find out who is the other person who any of my friend who has done a house. I will go to him. I will tell him how did you do your house, and he will tell me that is a backward going to the objective. Then
कमी से मजने कहीदेला यू कॉन्ट्रैक्ट दिस कॉन्ट्रैक्टर ही विल बी डूइंग एवरीथिंग फॉर यू मीन्स दैट इज ए बैकवर्ड गोइंग जिते तुम तुम गोटे आग गोल रु पछुआड़ी एनालिसिस कर तुम मन कर गोटे मैथमेटिक्स प्रोब्लेम सॉल्व आंसर पाइल आंसर रु जब चेक करके तुम क्वेश्चन आड़िकी फाइनल कॉलेज हाँ यस देन यू आर मेकिंग ए बैकवर्ड अप्रोच टू योर प्रोब्लेम बैकवर्ड अर्थ है जो सॉल्यूशन रु इश्यूटा को बैक करी कंफर्म कर तापरे आउ किछि प्रॉब्लम अछि जोटे थिंकिंग अलाउड प्लानिंग स्ट्रेटेजी मु कहिछि ह्यूरिस्टिक्स कोन थिंकिंग अलाउड किछि तमे जदि सानो पिलां को देखिबो से मानकर प्रॉब्लम से बारंबार मने पकई समाधान करନ୍ତି बेले बेले तमे मध्ये सेया करो गोटे जिंस को बारंबार मन पकाई एटा हलानी अरे आज करिवि काली करिवि ए दैट इज द काइंड ऑफ थिंग with this part is covered achi next is theoretical approach to problem solving achi बर्तमान आम आसवा जे विभिन्न साइकोलॉजिस्ट बा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी सब जो अच्छी what are the kinds of things they have stated about problems and nature of problem solving in human being. What a traditional approach that is called principles of associative learning in problem solving. Principles of associative learning in problem solving. What is that? Problem solving the different aspects discuss करूँ. One basic traditional approach is the principles of associative learning. Principles of associative learning means whenever we are facing a problem, whenever we are facing a new problem presently, it doesn't mean that the problem is all the way new to us. Everything of the problem is new to us. यही प्रॉब्लम रो किछि अंश आमे आगुरु भी एनकाउंटर करिछु एवं ताकू समाधान करिछु आगुरु छोटो प्रॉब्लम तीनटा हमर आमे समाधान करिछु नाउ इट्स ए बिगर वन we have already experienced like if you analyze the problems of life most of the problems are just not all on a sudden they accumulate systematically you face a smaller problem have a solution for that then it becomes another problem, then another problem like that. And associative models of problem solving explains that as human beings, as we go ahead, as we experience more and more, we apply our prior knowledge, prior association about that thing. More astare thore dahana put ko bhool re bulei deli more accident he gala. That becomes an association in my mental work. How से problem जेतबले आसीबो ताटो बिगर problem आसले मध्ये I will be handling. तेणु ए associative problem solving रो approach रो basic thing हला the fundamental idea is that we prepare ourselves with different kinds of unitary mental qualities we can apply subsequently to our problems of life. गोटे पिला तार प्रॉब्लम टाको समाधान जेतिक न करि परछि गोटे एडल्ट ताटो अधिक समाधान करूछि because the adult has experiences the adult has associative learning about solving his problems से ताको अप्लाई करि परछि तार एक्सपीरियंस तार स्किल्स से सिखिछि ताको अप्लाई करि परछि and that is what is one of the major approach to problem solving issues out हला gestalt approach हला looking at the problem globally. Gestalt शब्दर अर्थ as a whole. सब problem को you can have an approach as a totality, as a whole. समाधान गोटे total context there can be a solution. Anyway, this is the kind of thing. Sorry, gala. नुआ जिनस कौन आ गोटे जिन तुम अच्छी भितर जो कहूँ फंक्शनल फिक्सेडनेस मुझे इश्यू कहीदे
ଏଇଟା ପରେ କହିବି ଫଙ୍କସନାଲ ଫିକ୍ସନ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆସିବ ଅଛି ତ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆମର ଅଛି ଆଇନଷ୍ଟେଲମ ତମ ବହିରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଇଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଇନଷ୍ଟେଲମ ଆଇନ୍ସ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଅଦର ମେଥଡ୍ସ ଅଫ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ जोटा कि अदर मेथड्स कहबार अर्थ है दिस इज नॉट ए वेरी कॉमन मेथड बट दिस इज समटाइम्स बीइंग यूज्ड बाय पीपल एज ए मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आइंस्टीन कौन से मेथड आइंस्टीन मेथड है it is the development of a mechanized state of mind some people by virtue of their developmental requirements training capacity whatever you call they become mechanized in certain kinds of problem solving. आमे जाकू we can say professionals. आमे घर ताला पड़ी गले आमे घरटा तालाटू खोली पारुनु आम पे सेटा गोटे प्रॉब्लम चाबी हजी गला बट इफ ए प्रोफेशनल कम्स से धड़किने ताकू केमति कोन अप्रोच आछि से कोनी दोछि मींस इट्स ए मेकानाइज्ड वे तेणु मेकानाइज्ड माने आइंस्टाइन इज ए डेवलपमेंट ऑफ अ मेकानाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड often called the problem solving set गोटे सेट सेटा बेले बेले यार एटा को यार ना आइंस्टाइन काई के हिची तमे गोटे जदी फेमस आइंस्टाइन के विषय गोटे फेमस जिंस सुनिथिबो सच ए बिग साइंटिस्ट सच ए बिग पर्सन तांको गोटे इश्यू दिया गला दुईटा बिलेई जिबा पई गोटे घरे सुनिथिबो सब माने आइंस्टाइन के विषय कौन कले झरकार दीटा बिलेई सेफली जीवासवा करें से सजेस्ट कले बड़ बिलेई बड़ कणा माने बड़ बाट सान बिलेई सान बाट किंतु यार अदरवाइज सॉल्यूशन हो पारिबो जे बड़ बिलेई गोटे बाट बड़ बाट करदेले बड़ बिलेई जाई परिबो सान बिलेई भी जाई परिबो तेणु तांकर से जो सेट ए जो कॉन्सेप्टटा एटा कहते फंक्शनल फिक्सेडनेस इन थिंकिंग अनेक समय आमर ए फंक्शनल फिक्सेडनेस हमको थिंकिंग आमर थिंकिंग प्रोसेस टा लिमिटेड कर दिए मनकर मु तुमको कहबी पीन टाकू आल्पिन टाकू व्यवहार कले व्यवहार करी मते पांचटा यूज कहलो तमे जहाँ जहाँ देखि आल्पिन रे कौन कागज पत्र को गुंथा जाउची आल्पिन जहाँ जहाँ मनकर तमे पांच चारटा कहलो किंतु तमे जणे कहला जे आल्पिन टे पाइले मु मोर सांग मान को फोड़ी दे पारि मींस ही इज गोइंग बियॉन्ड द फंक्शनल फिक्सेडनेस मींस हमको जतले गोटे पर्टिकुलर एरिया रे हम ब्लॉक हो जाऊ आ आगु को जिबा पे सिथरे हमर न थाए दैट इज व्हाट इज देयर एंड दिस इज आइंस्टीन आल्सो देन तापरे मु आ नेक्स्ट जिंस कोन कहबी तुमको impediments of problem solving रो impediments बा अवरोध कौन 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 आमर प्रॉब्लम सॉल्विंग रो क्षमता को असुविधा रे पकाए बा हमको प्रॉब्लम सॉल्व करिवारे समस्या सृष्टि करे व्हाट आर दोज impediments not being methodical जहाँ लिखा है तुम बही रे मुझे कह दूची not being methodical तमे जदि मेथोडिकल न हबो अनेक समय रे you will create your problem for which you don't have a solution you don't get an easy solution कौन मेथोडिकल तमे आसिलो आज पेन टाको इठी थोई दिछ काली खाता टाको सिटी थोई दिछ आज के जुटी मन सिटी पके तापर तळे व्हेन यू हैव ए क्लास एंड you want to find out your pen you don't get it sometimes you will find that many people are facing problem because of their lack of a habit of being at least some methodical किछिटा मेथोडिकल दरकार यदि से मेथोडिकल तमे न हेलो you will have your problems मेथोडिकल मीन्स सिस्टमैटिक न हले मु जोटा कहली पेन टाको आनिकरी
माने कोठी गोटे पर्टिकुलर जगार रखिले दैट इज योर मेथोडिकल अप्रोच यदि पेन टा आज ठीक थोइदिल काली टेबुल ऊपर थोइदिल परदिन डाइनिंग ऊपर थोइदिल ता परदिन बेड ऊपर थोइदिल ता परदिन आउ पेन खोजी खोजी पाइबने कोठी थोइ देति and that becomes your problem हठात बाहर लाको पेन मिलुनी that is being non methodical that is the impediment to problem lack of commitment to solving the problem मोर हला मु याको समाधान करिबी I must address my problem because it is my problem I must solve it but some people they do have careless attitude they don't have a commitment हा हला मु फेल हेली मु नेक्स्ट टाइम केमिति करी करी इंप्रूव करिनी परीक्षा दे पास करिनी से कमिटमेंट जदि न रहला जहाँ हेले भी आउ थरे फेल हमार संभावना अछि and that is lack of commitment misinterpreting the problem बेले बेले आम प्रॉब्लम टाको आमे अवॉइड करिया पई आमे भूल कथाटे कहू मु परीक्षा देली पाठ पढ़ी नथली ठीक रे पढ़िलिनी परीक्षा देली परीक्षा रे फेल हेली नाउ आई एम मिसइंटरप्रिटिंग इट कोन सार माने ठीक रे खाता देखिले ने हम सेंग मार्क दे देले खाता कोन के पढुची मु भलो लिखितिली मते मार्क देले दैट इज मिसइंटरप्रिटिंग योर प्रॉब्लम एंड देन लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस हां जे कोन से प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम रे समाधान तम पाखरे बाट नै अनेक समय रे तमे इग्नोरेंट समझ तमे कोन मु कोन समस्त एवरीबॉडी इज इग्नोर अबाउट सम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम मन कर कोरोना कोविड-19 रो आज प्रॉब्लम तमे जेति की इग्नोरेंट पृथ्वी सेति की इग्नोरेंट समाधान नाही समाधान बाट नाही जिते नॉलेजेबल हबो सेते योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व जदि तमे इग्नोरेंट रहलो यू विल बी लाइक दिस दीज आर सम ऑफ द इम्पेडिमेंट्स आउ किछ अछि तमे पढिबो मु आने टोटल जिंस को कवर करिया चाहूँ आज impediments परे नेक्स्ट इश्यू कौन रहिला अच्छा आउ अलगा टाइप रो मध्ये impediments अछि आउ गोटे टाइप रो impediments बा ब्लॉकिंग बिलिता पाउची समस्या बैरियर्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग परसेप्चुअल ब्लॉक्स आमको अनेक एकड़ा को मु जा कहूची impediments माने what are the things which block or which stand on the way of our problem solving आम समस्या समाधान करि पारुनु कोन कोन कारण हेई पारे what are the difficulties in our problem solving ता भीतर गोटे सेगुडा को जो कहि गली सेगुडा गोटे आ गोटे हला अदर बैरियर्स आ किछि अलगा टाइप रो वे रे एक्सप्लेन कराई छी वन इज परसेप्चुअल ब्लॉक माने मु जानि पारु मु बुझी पारु मु जे परंत न बुझी पारिबी हाउ कैन आई सॉल्व माय प्रॉब्लम बुझी परछ ना नहीं देयर आर certain situations certain conditions where the person is not able to understand the problem मु मास्क वर्तमान जा अवस्था चली मु मास्क पिंधिकी जीवी रास्ता रे देखिबो 20 जन लोक 100 जन को मास्क पिंधु नांती काहे की पिंधु नांती दिस इज a perceptual block they just don't perceive of their problem ताकर जे माने कोविड पॉजिटिव हेई पारे एक कथा से माने परसीव करि पानांती देखि पारु नांती they are not able तेणु this is a problem for them they are not able to perceive mask न पिंधिबाटा तांका पई गोटे problem they are not able to perceive and that is what is you can call as a perceptual block and then similarly emotional blocks मु कहूची जे प्रॉब्लम समाधान दिगरे तमरो कोन कोन इम्पेडिमेंट्स बा बैरियर इमोशनल ब्लॉक्स कोन मा देखि पारुनी पुअर माने प्रॉब्लम्स पुअ ड्रग एडिक्ट हे गलनी पुअ इकर सरलनी मा जानि पारुनी काइना द माने शी इज नॉट एबल टू परसीव बिकॉज़ देयर इज एन इमोशनल ब्लॉकिंग द मदर इज नॉट एबल टू perceive but emotionally so माने so much block she could mo po दुनिया रे समस्त भल से किछ नहीं but things are happening and that is a kind of problem
माने फैमिली रिलेशनशिप रे प्रॉब्लम अनेक समय रे द प्रॉब्लम इज एन इमोशनल ब्लॉकिंग husband wife ये भितरे it's a kind of problem which are arising from emotional blocking. The person is not able to see the other person's problem because of emotion. That is emotional blocking. पढ़िब एगुड़ा सब पढ़ी खाली आइडियाज दे जाउछि intellectual blocking. There are certain problems जार मूल कारण हला कौन अज्ञान अज्ञान हूँ बहुत प्रोब्लेम मूल समस्या मूल कारण इंटेलेक्चुअल नॉलेज से विषय ज्ञान इटा कौन सेटा कौन ये जो ज्ञान अच्छी मनुष्यर से ज्ञान अभाव जो अनेक समय तुम से सब एग्जांपल देकर भाव जे मनुष्य केमिति निजर प्रॉब्लम क्रिएट करुच्ची बिकॉज इट डजंट नो तार नॉलेज नहीं से विषय बहुत बहुत प्रॉब्लम्स अच्छी समस्त लाइफ रे प्रॉब्लम्स रहउची because it doesn't know what is the solution, why it is there. Knowledge or ज्ञान or अभाव गला. Then next is environment expressive गोटे बड़ समस्या प्रॉब्लम गोटे बड़ एक्सप्रेसिव ब्लॉक्स कही पारिबार अक्षमता नो आमे ताऊ कहू द एबिलिटी टू से नो अनेक समय तुमको नहीं करिया को पड़िबो यू मस्ट लर्न टू से नो दैट इज एन एक्सप्रेसिव एबिलिटी यू मस्ट लर्न टू से यस तुमको जने सांग मागिला 5000 टका धार देता तुम जानछे सांग पैसा फेरेबनी किंतु तुम तक नाही करि पार प्रॉब्लम बढ़िला से नेला फेरिलानी तापर तमर तार कंडोला दैट इज व्हाट इज expressive blocks that also leads to kind of problems. You are not able to express the appropriate thing in appropriate situation. as जोटा गोटे बड़ प्रॉब्लम रो सोर्स ठीक कथा ठीक जगह रे न कहि पारि करी परवर्ती समय रे तार प्रॉब्लम फेस करला. एंड देन एनवायरमेंटल ब्लॉक्स आउ गोटे प्रॉब्लम समाधान एनवायरमेंट जे कंधमाल जंगल रे अछि तार हेल्थ प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज से ठीक अटेंड करि पारे बिकॉज दैट इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. तेणु एनवायरमेंट रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम माने मु गोटे गोटे एग्जांपल भलिया टिके टिके कहि दउछि बट यू कैन हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. एंड फाइनली कल्चरल ब्लॉक्स हमरो वुमेन मानकर यदि प्रॉब्लम्स तमे एनालिसिस करिवो देखियो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू कल्चरल ब्लॉक्स. आम कल्चर आम समाज जो सब टैबूज हमको फिक्स करिछि ता द्वारा गुडे प्रॉब्लम होछि समाज एंड दैट इज ड्यू टू कल्चरल ब्लॉक्स. कल्चर जदि तमरो प्रॉब्लम रो सोर्स हला जदि कल्चर तुमको बाधा देला कोनसी जिंस पई देन and you have to face a problem that you can call a cultural block. These are some of the kinds of things that you must know. Now with this kind of खाली जानिछो बेसिक आइडियाज खाली हमर दवा कथा कारण it is not possible to cover in details. Sir, can you please repeat number 3, the barriers of problem solving, number 3, because due to bad network I was not able to hear that. Number 3 barriers for number 3 after emotional block. Emotional block. What is emotion? Sometimes ame problem face करू because we respond to our emotion more than the problem. A mother is in problem because of the son, because the mother is not able to appropriately discuss, appropriately challenge, or appropriately train the son about the kind of thing. बुझी पारछ ना नहीं इमोशन सिटी बाटर पळे आछी म जेते बेले जो कोनोसी प्रॉब्लम रो समाधान बाटरे इमोशन पळे आछी हस्बैंड वाइफ गंडगोल भे सहज समाधान हेगो ता भितर इमोशन को तुम माइनस कर दो
ସେଠି ଇମୋସନ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି ଅନେକ ସମୟରେ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ଗଣ୍ଡଗୋଳର ତ ମୂଳ ବାଟ ହେଲା ପୋଲିସ କି ଯିବ, ଏଫଆଇଆର ଦବ, ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ସମାଧାନ ହବ, ଯାହା ସମାଧାନ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ରୁଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଇଏ। କିନ୍ତୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। 98 ଫ୍ୟାମିଲି ଭାଓଲେନ୍ସରେ ତମେ ଦେଖିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନୋ ରିପୋର୍ଟିଂ। କାହିଁକି? ବିକଜ ଇମୋସନ। କଣ କହିବି, ୱାଇଫ କହୁଛି କଣ କହିବି, ସେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ। ଏଇ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଯୋଉଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି, ବିକଜ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ ବିଙ୍ଗ କ୍ରିଏଟେଡ ବାଇ ଦ ବ୍ଲକିଂ ଅଫ ଇମୋସନ। ଇମୋସନଟା ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଇଏ, ସେଇଟା କୁହାହଉଛି ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲକିଂ। ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଇମୋସନ ବ୍ଲକିଂ ହଉଛି। ତମେ ଦେଖିବ ମା ପୁଅ, ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ, ଇଭେନ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ସାଙ୍ଗଟେ ତମକୁ ମାଗୁଛି, ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ପଇସା ସେ ଫେରେଇବନି, ତମର କାପାସିଟି ବି ତମର ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ତମେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ରଖିଦେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତମ ମନକୁ ଅଛି ସାଙ୍ଗଟା ଯାହା ହେଲେ ବି, ଯେତେବେଳେ ଲଜିକଟା ଫେଲ କରୁଛି ଇନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ ଇମୋସନ, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ରାଇଟ, ସମଥିଙ୍ଗ ଲଜିକାଲ, ସମଥିଙ୍ଗ ଟ୍ରୁଥ। ଯଦି ସେ ଲଜିକଟା ଫେଲ କଲା ଇମୋସନ ଆଗରେ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲକିଂ। ବୁଝିହେଲା? Yes sir. ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କାହାର କଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପଚାର। Sir या ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ Sir, ଥିଲା ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲକ୍। metacognition. ବଡ ପାଟିରେ ମେଟାକଗ୍ନିସନ। ଆଜ୍ଞା sir, ହଁ, ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମେଟାକଗ୍ନିସନ ହଉଛି, ମେଟାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା above, ମେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ମେଟା ଫିଜିକ୍ସ, ମେଟା ସାଇନ୍ସ। ମେଟା ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଦେଲା ମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ, ମାନେ ସୁପର, ଏଟାକୁ ମେଟା ଲଗାଯାଏ। ମେଟା କଗ୍ନିସନ ହେଲା you have some, you have something, your knowledge, your attitude, your thinking, all these things, your learning, everything is your cognitive process. ତମେ as a human being you have some cognitive learning, ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ cognition ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ you can also using that cognition, you can also go a higher level। स्वामी विवेकानंद ताको नॉलेज को यूज करके से जो हायर लेवल ऑफ थिंकिंग एंड ह्यूमन लाइफ जो फिलॉसफी से प्रपोज कले, दैट इज ए मेटा कॉग्निटिव थिंकिंग। मेटा मींस ए हायर लेवल, ए बियॉन्ड लेवल। एंड द मोर यू गो इनटू द मेटा लेवल, द लेस विल बी योर। मन करो सबु समस्यार मूल, जने कहला पैसा सबु समस्यार मूल। Kintu, there are people who understood that money is actually not the final term of life. That is a meta thinking. जे material world रो beyond को जाउची, he is going to a meta thinking. जार जोटा हमें कहूँ, that is meta. And meta thinking जते बढ़िबो, meta cognition जते आगु को जने जीवो, तार life रो problems जोटा को तमे देखुछ, जो मन को सुनुछ, as great people, they have limited problems, they don't have तमरो जहा problem अछि ताकर सेहा problem नाही। काहे कि ना they have gone beyond a level of cognition, meta cognition level ले पहुंचंती। से meta cognition level ले पहुंच गले, लाइफ रो problem रिड्यूस कर जो। meta means what higher level of mind, higher level of thinking, सेठी problem कमी जीवो। जो मैंने तुमको एक्सप्लेन करूछंती, जो मैंने तुमे से सुनिबो, जो मैंने एक्सप्लेन करूछंती लाइफ प्रॉब्लम कोन एवं तार बियॉन्ड गोटे अछि। थैंक यू। Anybody else? Sir, can we say that in metacognition state a person has achieved a highly intellectual state? Yes, exact. Transcendence, you can call it state of transcendence. जो कुछ transcendence, that is a metacognition. So the spiritual leaders can be called as they have achieved the metacognition. Spiritualism कहि पारू, किंतु spiritualism कहि करी ताको जदि religious orientation करबा, हम scientific character lose करू।
Metacognition is a higher state of mind. No, the ଆମେ both are ତାକୁ ଗୋଟେ different things. Spiritual is different and religion is different, right? ନାଇଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ମାନେ ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ଟାକୁ ମୁଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟର୍ମ ହିସାବରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ୍ ଟାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ରିଲିଜିୟସିଟି ଯୋଉଟା ଆମେ ଯଦି ରିଲିଜିୟନ ସହିତ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବୁ ଯୋଉଟାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ଯୋଉଟା ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପରେ ତମର ଲାଇଫର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଜାଣିପାରୁଛି ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସମ୍ଭାବୀ ଏବଂ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଇନକଲକୁଲେଟ କରିକି ତାର ମେଟା ଥିଙ୍କିଂ ସେ ଅନୁସାରେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେ ଆଉ ମରିବାକୁ ଭୟ କରିବନି କି ମରିବାଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନୁହେଁ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଭେଲ। True, sir, true. ଯେମିତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ସାରିଲି, ଖାଲି ଆଜି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କୋର୍ସ ମତେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା MPC-1, that part of the course is covered and over ହେଲା। या ପରେ ମୋଷ୍ଟ ପସିବଲି ମୁଁ ଦେଖିନି, ମତେ ଲାଗୁଛି 18, 19, 20 ଏଇ ସମୟରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ଅଛି ପଢେଇବା ପାଇଁ 4ଟା କ୍ଲାସ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଟିକେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦଉଛି that will be a kind of difficult paper। ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ତମକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବି, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ଲାନିଂ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବି ଠିକରେ। ମୋଷ୍ଟ ପସିବଲି ମୁଁ ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି that is the statistics paper। ତମର କିଛି କାଲକୁଲେସନ, କିଛି ଥିଓରି, କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି, ୱିଲ୍ ବି ଡୁଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍। ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ପିଜି ଫିଜିରେ ମୁଁ ପଢେଇଛି, ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପଢେଇଥିଲି। ଯଦି ତମେ ଚାହିଁବ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରାୟର ଇଏ ସେ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି ଦେଖିଦବ, କେତେଟା ଦେଖିଦବ ମୋର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ା ଥିବ, ତମର ଇଗ୍ନୋ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କ୍ଲାସ ଥିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବ? ହଁ, ନା ମୋ ନାଇଁ? ନାଁରେ ଇଗ୍ନୋ ମାରିକିରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାହାର କଲେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସ ଥିବ ତା ଭିତରୁ କେତେଟା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କ୍ଲାସ ଯଦି ଦେଖିଦବ ଦେଖିଦବ। ଆଜ୍ଞା So ସାର୍। that you get prepared for the class। କାରଣ ଏଇଟାରେ ଥିଓରିଟିକାଲ ଜିନିଷ ପଢେଇବା ଆଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପଢେଇବା ଅନଲାଇନ ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ I will give the ମାନେ best thing for that। Now should we close? Yes, sir. Thank you so much, sir. Yes, sir. Thank you. Bye. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank Thank you, you. sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. We'll be waiting for more classes. We'll be waiting for more classes, sir. ନା ମତେ ଶୁଭୁନି ଆଉ ଥରେ। We'll be waiting for your more classes from ହଁ you. ଠିକ ଅଛି। I will be taking your course। Maybe I will be taking another course in the meantime। Okay. Thank you, sir. Good night. Good night. Bye. Good night and thank you, sir. Bye. Good night, sir. Thank you. Good night, sir, and thank you. Bye.